एनसीईआरटी को सब कुछ नहीं मानना है लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना है. Hello everyone. So hi, welcome back again. And today we are going to talk about again one of the important topic: is NCRT enough for us or not? So honestly, I don't know how many students are there who already asked me every time, "Ma'am, is NCRT enough for us, or do we need to purchase any other book with it?" And I'm sure if you are the student, then you also ask this question frequently from your teachers: is NCRT enough? And most of the time students feel like मेरे जो friends हैं उन्होंने already इतनी मोटी मोटी books solve कर ली है and we are only stick with the NCRT, we are only stuck there. So how should we know, is NCRT enough, and even if it is enough, how much it's enough, and how much do we need to prefer any other book? First of all, talking about the NEET exam. So, exam is obviously separated into three compartments: physics, chemistry, and biology. For the biology, we have two more subjects: zoology and botany. So, starting with the chemistry part. So, obviously, for the chemistry, NCRT is the queen. Like एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ कुछ टॉपिक्स में आते भी हैं केमिस्ट्री के अंदर, एंड फॉर द सम टॉपिक्स इट इज ओनली फॉर द रिवीजन और फॉर द अंडरस्टैंडिंग. सो इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, अगेन वी हैव थ्री टॉपिक्स: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो टॉकिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द मेन पॉइंट जहां पर एनसीईआरटी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है. इट्स अ टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, योर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर्स, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आपके नीट एग्जाम्स में आते हैं. सो येस, फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी. बट द मेन थिंग इज, स्टूडेंट्स जस्ट थिंक कि एनसीईआरटी पढ़नी है सो जस्ट डू द बैक एक्सरसाइज. दिस इज द मेन मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग. Just doing the main exercise is not enough. You have to cover the solved example, in-text questions, then back exercise, and read the chapter thoroughly. And by thoroughly, it means that you have to read each and every line very carefully, underline every line if it is important, and then do the chapter. Basically, NCERT is such a book जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि why that line is written. Okay, sometimes they will not give you the explanation, but they want you to think about it. So इसीलिए NCERT बहुत अच्छी बुक है if you are preparing for the theoretical chapters. Now talking about the organic, for the organic chemistry NCERT is okay, but sometimes कुछ ऐसी reactions होती है which are not given in the NCERT, so you have to prefer some other book for that. And for the physical, yes, I will say NCERT is not that much enough. Like you will only get to the 80% with the NCERT, like 70 to 80%. But if you want to go beyond that, if you want to reach 90%, 100%, then obviously आपको दूसरी बुक रेफर करनी ही होगी. टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स, सो फॉर फिजिक्स एनसीईआरटी इज नॉट इनफ. लाइक आप फिजिक्स के लिए आप थोड़ा रीड कर सकते हो चैप्टर, बट फॉर द क्वेश्चंस, फॉर ऑल द न्यूमेरिकल्स, you obviously you have to prefer the another book. Please do not rely on the NCERT only. For the biology, we have two compartments: zoology and botany. Sometimes बिल्कुल same questions, same lines आपके उठकर एग्जाम्स में आ जाते हैं. So for the biology, NCERT is your holy book. आप वो पाप नहीं कर सकते हो कि एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई लाइन आपने स्किप कर दी एंड आप ऐसे ही चले गए हो एग्जाम में. नो, you cannot do that. For the biology, NCERT is the most important. Now talking about the J mains, again it's the same. For chemistry you have to do the same thing and then refer some other books also. For physics the same thing goes, but for the maths again NCERT is not enough, the questions are not enough. First do the question of NCERT, and if you think that you are like good with that, then go for the other books. But NCERT alone is not enough for the mathematics. Now talking about the J advanced level. So for the advanced level in all the three subjects, either it is chemistry, physics or biology, NCERT is not at all enough. Like वहाँ से हो सकता है आप सिर्फ 60% ही प्रिपेयर कर पाओ. So please do not rely on the NCERT books for the advanced. आप NCERT से पढ़ सकते हो, बट अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, एक ऐसी बुक उठाओ, कोई DPPs, कुछ टेस्ट पेपर्स आप ऐसे उठा लो जिसमें मेंस से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस सब कुछ दे रखे हैं. सो बेसिकली whenever you are preparing for the advanced level, don't directly go to that higher level questions. First of all, same level, solve the NCERT, then go for the mains questions, then do the PYQs and then go for the advanced. ये आपका पूरा सीक्वेंस होना चाहिए जे एडवांस के प्रिपरेशन के लिए. सो अगर आप इस सीक्वेंस से चलोगे, एडवांस की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाएगी. एनसीईआरटी को सब कुछ नहीं मानना है लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं. नाउ इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीड द एनसीईआरटी बुक, I will let you know in the next videos. So yeah, for this, that's all from my side. I hope to see you again in the next video. Thank you.